Students, in this video I am going to discuss about the topic respiration. In my previous videos I have told you what is nutrition. Now the second life process which we are going to talk about in this is respiration. Now what is respiration? First of all, you have to understand the difference between respiration and breathing. Basically, breathing is a physical process in which we take in the oxygen and release carbon dioxide. So it is just a physical process. Now, respiration is a chemical process. Let's see. It is a process of breakdown of glucose completely into carbon dioxide and water with the help of oxygen. Now, in my previous video, when I have discussed nutrition, I have told you that the plants produce glucose and the animals consume the plants. So we take the food from the plants in the form of glucose. Okay, so now this glucose will go into our body. जब ये हमारी बॉडी में जाएगा, so this glucose will further be broken down. So this process of broken down of the glucose into carbon dioxide and water is respiration. Now this is a glucose molecule. Glucose molecule का फॉर्मूला जब मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो क्या था? C6H12O6. Now how many carbons glucose have? 6 carbon molecules. ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है आफ्टर डाइजेशन, दिस मॉलिक्यूल इज एब्जॉर्ब इन दी सेल. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो शुगर है वो बेसिकली किस में ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज में, और फिर ये सेल में एब्जॉर्ब होता है. तो सेल के साइटोप्लाज्म में दिस 6 carbon molecule glucose is broken down into 2-3 carbon molecule pyruvate. Pyruvate जो होता है उसके पास 3 कार्बन्स होते हैं एंड ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुवेट के. 3 + 3 6. So 1 glucose will form 2 pyruvate in the cytoplasm. Now this pyruvate molecule have different fates. Okay. नाउ इन यीस्ट, जब हम यीस्ट की बात करते हैं, यीस्ट में जो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. नाउ इन दिस ऑक्सीजन इज एब्सेंट. यीस्ट में जो रेस्पिरेशन हो रही है, इट इज विदाउट ऑक्सीजन. सो इथेनॉल, अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. एक कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज होता है एंड एनर्जी इज फॉर्म्ड. नाउ इन आवर बॉडी दिस पायरुवेट हैज 2 फेट्स. फर्स्ट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, देन दिस पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दिस विल टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल. ये रिएक्शन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. एंड इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा पायरुवेट का. CO2 जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी आउट थ्रू द लंग्स, वाटर रिलीज्ड आउट एंड एनर्जी विल बी यूज्ड. Now, one more reaction takes place in our body, that is during heavy exercise. जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है? There is insufficient oxygen. जो ऑक्सीजन होता है वो insufficient हो जाता है. तो anaerobic respiration हमारी बॉडी में होता है एंड उसमें pyruvate is converted into a 3 carbon molecule, that is lactic acid. Okay, this takes place in the muscle cells during the vigorous exercise plus energy. So the first and second is the anaerobic respiration because oxygen is absent. The first is taking place inside the yeast and the second one in the muscle cells of our body. The third one is aerobic respiration because oxygen is present. It takes place in the mitochondria of each and every cell. Okay. Now this pyruvate will enter into the mitochondria and then it will be broken down. Now the energy, ये सारी जगह energy is produced. तो energy is basically produced in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. This is a full form of ATP. It is a fuel. It is like a fuel. It is an energy currency of the body which produce energy, basically which is a form of energy in the body which helps us to function. Now respiration, as I told you, in the presence of oxygen is aerobic respiration, and in the absence of oxygen, when the respiration is taking place, it is anaerobic respiration. Okay, so
This is the entire process of respiration. In plants also, this glucose molecule breaks down in the similar way. So plants के अंदर both process takes place. One is photosynthesis and second is respiration also takes place. In photosynthesis glucose molecule is formed and जब भी plant को energy की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, वही glucose molecule को break down करके energy produce करता है. तो respiration also takes place inside the mitochondria of the plants. So I am done with this respiration. I hope you have understood. Thank you.